check this out. In just a sec, I'm gonna speak with a different accent. And just between you and me, I don't really know how. Also tired of dealing with complex setups just to live stream 24/7? Well, hold on tight because I've got some exciting news for you. Upstream SO have made an ultimate solution for seamless 24/7 live streaming and is here to transform your content creation journey. So, how does it work? Simple. Head over to Upstream SO, sign up and add your stream key from YouTube or any other platform you prefer. Then, easily upload your media to the library, and here comes the fun part. Customize your streams with our intuitive drag and drop stream builder. Want to make your live stream even more engaging? Well,
Upstream SO has got your back. You can add your logo, overlay a current track, throw in a widget from Stream Elements, and more, all in just a few clicks. Oh, and did I mention that there is no server setup as well? Unbelievable, right? Upstream SO has made 24/7 live streaming hassle-free and jam-packed. YouTube for any period of time, you probably have a lot of old videos. I know I have over 50 good old videos that just don't get views that I think are still relevant.
relevant and could actually help you? What if you could take those old videos and turn them into a 24-hour live stream that would gain subscribers and watch time for your channel? It seems like a win-win situation to me. So today, I'm going to show you how to turn your old recorded content into a 24/7 live stream. We're going to use OBS and totally free software. We've got a lot to get to, so you know what? Let's get to it! I think this could work for any type of channel, but the most effective use that I've seen is from entertainment channels that have videos that are generally 2 to 5 minutes long. I think this opens up some awesome opportunities for game streamers to take some time and go through their old streams and just cut out a bunch of memorable moments in the clips and stream those. Of course, if you're doing it right, you already released videos of those clips, so all you need to do is add them to the stream. For a teaching channel like mine that has longer videos, I do think it's important to set up an intro video that goes in between each video, explaining to the viewer what they're actually watching. For me, I would say something like, this live stream is a collection of helpful videos from my channel. If you find yourself wanting to check out the original video, there is a link in the description which will take you there and have all of the original links that were included in the video. Now, a stream like this also offers some pretty unique monetization strategies. You can still let YouTube break in and add all of its standard ads. Of course, I'm going to show you how to do that when we get to the setup portion. But you can also put affiliate or sponsor spots in between videos, or even sell sponsorships for different segments of the stream. And since the stream is going to run 24 hours a day, 7 days a week, and these spots are going to play multiple times over the course of those live streams, affiliates and sponsors are getting good value for it if it does decent numbers of viewership. Setting all this up is actually pretty easy. Let me show you how it works. Now, to do this, we're going to use an application called VLC. It's absolutely free, and it's actually open source. You can see if you choose to use it, or you want to use it and you really like it, you can donate up here at the top. All you have to do is drop down this little arrow and select the version of the software that you need, and then just install it. Make sure you get the right version, otherwise it's not going to work in your OBS. There are links in the description down below so you can download it, install it, and follow along. I highly recommend you do. It is the best way to learn. Once we have VLC installed, all we need to do is open up our OBS. This is a standard thing. It's just got the scene in here. We can load in our sources, click the plus, and select the VLC video source. And you don't need to do anything, rename it or anything, just click OK. And here, we're just going to load our playlist. Since it's going to be a 24/7 live stream, we're going to go ahead and load the playlist. And what I did was I just loaded all of my videos into one folder. And you can basically download your own videos and load them all into one folder. If you like, you can do this kind of any way that you want. But that is kind of the highest quality, easiest way to do it. You can have as many videos as you want. The stream's going to run 24 hours a day, 7 days a week. So you probably don't want it being too repetitive. You want at least a couple of hours of actual content in here that will repeat over and over again. In my case, I have about 10 videos. Probably encompasses maybe 2.5 to 3 hours worth of actual content. So in this folder, you would also want to put in other things, like an intro video or an outro video that's going to go in between each one of these. Now, you can also do this other ways. You can add files or a full directory, or you can actually load it from a path or URL. So if you wanted to use, say, a file from a website or a video or something like that, you can add it in here, and it will work the same way. So what you can easily do is just click plus, go to add files. I'm going to go ahead and select everything in this directory and click open. So now we have all of the files in here ready to go. We know it's going to loop because it says loop right here. And what I'm going to do is go ahead and adjust the order of any of the videos that I want. So let's say that I was going to use a video in between each one of these that was going to basically introduce it. Well, all I want to do is load that video in after each one of these videos. So I would just go ahead and take it and load in our intro video. Pretty simple. So all I have to do is click plus, add files, and load in an intro, and boom. So we've got our intro. It's all the way here at the bottom, and I can just move this up so it's at the top. And then what I'm going to do is go ahead and click plus again, add files, add the intro video, load it in there. I'm going to go down here to the bottom and move it up so that it's in between each video. And you can use this strategy for any kind of sponsorship or anything like that as well. You can put it in between the videos, before your intro, after your intro, whatever you want to do. Once you have all this set up, you're basically done. You click OK, and boom. You notice how my video is much larger than what it would normally be. Well, that's because I film it in 4K, so I can just right click, go to transform, and then I can reset the transform, or you can just do this. Now, this intro hasn't been edited yet, but it is kind of a placeholder video. What's going to happen is once this is done, it's just going to flip over to the next one. So there we go, and boom, it flips over to the first video. Now, the one thing about using VLC to do this is you can't really go into properties and see which video is running. There's just no way to know. Now, I know what my content is, and I can tell basically by the time that the video, the length of the video, what it is, but just so you know, once you start this, once you kick it off, it just is what it is. I can stop it, and then if I click this again, it's going to go and start from the very, very beginning. So just keep that in mind. Then I can click any of these and just go from one video to the next. So that's the basic setup. You can right-click, go back into properties, organize these anytime you want. In fact, while you're live streaming, you can add and remove or reorganize these videos, and it will just continue on as usual. So basically, we got all this set up. You just want to make sure you go into your settings and have everything set up, have your stream set up so it's going to the right server and all that kind of stuff. And theoretically, all you need to do is click start streaming. But I want to go over into the YouTube section and kind of show you a little bit about how to set that side up and how you might want to configure your monetization for that as well. So when you're in YouTube, in your dashboard, you click go live, you're all set. You can come in here. Now you could theoretically just go over here to stream and you can start, you can just add your stream key, start streaming, you're ready to go. It's going to just do its thing. But normally, I would like to schedule something like this. It just makes life easier. So you can schedule a stream and you can use any of your old streams. You can just reuse the settings, which is kind of nice because it brings in your description and everything like that. Now this is a different kind of stream. So you're probably going to want to adjust your description, make sure that it actually describes what you're getting and has links to the original videos and any of your sponsors or anything like that. You're going to want to put that in there. Obviously, title your stream appropriately as well. Put in any tags. If you've got paid promotion, go ahead and this stream contains paid promotion. You would want to check that off. Also, the altered content thing, you want to check that off. So make sure that you go in here and fill in your tags, do all the stuff that you would normally do for any other live stream. Now the monetization piece is what I wanted to kind of talk about here. You can just let YouTube insert mid-roll ads for you. If you just click on that, YouTube will just put ads in there anytime it feels like it, and then it will just continue the videos after the ads. Just the same. That's just the way it goes. So you can do that. You can also choose to schedule mid-roll ad frequency. So if you know your videos are all 3 minutes in length or whatever, you could schedule your ads to run every 3 minutes, have it all set up.
Or if you're like me, you can insert mid-roll ads manually, which means that they never get put in the stream. It really depends on whether you want to do this. Now, if I was going to monetize a 24/7 live stream, I'd probably either try to make sure that all my content took breaks at the same frequency so I could just put this in there, or I just have them insert mid-roll ads at random the way that YouTube will just do. And there you go. So that is how you're going to set up your monetization. You can go into customization, and we've kind of been through all this. You should know how to set up a live stream by now. Visibility, same thing, private, unlisted, members only, public. You want your audience to actually be able to see it, you got to set it to public, and you can schedule it up for any time you want. And you're all set. You just click done, and this will create your stream. And once you create your stream, all you have to do is go into your stream here, you go into settings, or you go into stream, and you just put your stream key in there, and then when you're ready to go, you click start streaming. And when you click start streaming, what it's going to do is start streaming this to YouTube. That doesn't necessarily mean the stream is live. When you start doing it, you're going to get a go live button up here at the top to turn on YouTube and make it go live. So what I would do is go in here, turn this off so that the stream is going to be ready. Then what I would do is go ahead and go over here. I would click the go live button that's going to be up here. And as soon as this says we're live, I just go in here and I go like this, and boom, it kicks off, and our stream is rolling, and there's nothing else that you need. Worked magically for me. It has helped me with less dropout. It has helped me with more conversion, and that is razor phase magic checkout. You know, there are multiple clicks, so this is reduced the. Now, I told you this was easy to set up. I have some super important information that you definitely want to know before you kick off your 24/7 live stream. But first, I work really hard to try to create content that I think you're going to enjoy. Sometimes I hit, sometimes I miss, but honestly, it's really hard to know for sure. And that's where you can really help me out. If you're enjoying this video, leave it a thumbs up. And if it's not your cup of tea, do me a favor and just leave me a thumbs down. It's perfectly fine. If every single person watching this video right now gives it a thumbs up or a thumbs down, I'm definitely going to know this is the kind of content that you want to see. So thumbs up, thumbs down right now. Thank you very much. Let's get right back into the video. One major drawback of this method of 24/7 streaming is that you tie up your machine and your network the entire time that the stream is active. I know for me and many others, this could be a huge issue. I create content on this machine, and I also game on it as well. To fix this, you can actually buy server space, and you don't actually need to have much. Then all you do is install OBS and VLC on the server and configure it just like I showed you here. Then you just kick off the stream on the server, and you're done. It runs everything, and it's not on your computer at all, so set it and forget it. You can move all your videos onto the server or run them from links, although I would say that loading the videos on the server gives you the best quality and probably the most reliable results as well. And something like this isn't expensive either. You could probably do it for about $20 a month. Now, nearly every video that I've ever done, I've thoroughly tested the plugin, the hardware, or the strategy, so I give you a final verdict that you can be confident in. But in this case, I'm just giving you the information on how to actually do it. Now, I know that a 24/7 stream will help channels struggling with watch time to get over that 4K hump and get monetized. But beyond that, I don't really know how effective this is at steering people towards your original content or growing your subscriber count. In fact, I would be really interested in the results that you have, so let me know about it in the comments. And if you're new to OBS and you just want to learn some of the basics, you should check this video out. And if you're always looking for tools, tips, and tricks to help make you a better live streamer or YouTuber, subscribe to the channel. My name is Michael Fire Jr. Thank you so much for watching. Have a great day, and I'll see you in the next one.
is ICJ, International Court of Justice. So we have seen this one thing, that what is ICJ, International Court of Justice. Now we are also going to compare it with respect to ICC, International Criminal Court. And then we will also try to see one more thing, that what is the judgment of ICJ, what is the judgment of ICJ with respect to climate regime of the world. So that is one of the topics which we are going to discuss from the IR section. Then anti-defection has been there in the news. Anti-defection has been there in the news because the Supreme Court is making some like comments on this. When last week, last Saturday. So there, this is one topic. Just seen a basic part of the rainbow. We will see other. When you also create a spark between two wires, when you create a spark between two wires, then also you will find that lightning or that chamakte hue badal. Any other question? Good morning. Good morning to all. Please. और ऐसे बहुत सारे एक लिस्ट भी हमने दिया है बीपीएससी वालों को, जो बीपीएससी दे रहे हैं। वहाँ तो लोकोक्तियों पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, मतलब निबंध लिखना है।
बैठिए बैठिए। गुड आफ्टरनून। आइए बैठिए। शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। सब ठीक ठाक है। तो क्या क्या बात हुई थी कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था? कौन रिपीट करेगा? इधर देखो, कौन रिपीट करेगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 वाला? राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944। बस उसके बाद सबको हम पहचान गए, सबको जान भी रहे। आप बोलते रहिए हम सबको। बोलो बोलो। देखा ना? क्या देख? बोले बुक देख रहा हूँ, देख। वेबल प्लान में क्या था? तो बोला कि वही जो आपने कहा था वेबल प्लान में। Yes, got it. अभी मेरा सवाल चल रहा है, मेरी बात सुनो। और which act provided separate electorates to labor and women? Separate electorates to labor and women. पार्लियामेंट्री फॉर्म में दो चार बात हासिल करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में लेबर और वुमेन को मिला था। लिखा हुआ है उसमें कॉपी में। क्या सब तो अच्छी बात है ना? बोलो। सिखों को कब मिला? 1999। ओके। इन विच एक्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टार्टेड गेटिंग सैलरी फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू? कॉन्टेंगिंग ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म 1919 एक्ट। इन विच एक्ट हाई कमिश्नर्स वाज अपॉइंटेड इन लंदन? पूरा में बंद करके पूछना चाहिए। बस आपको कोई मेरी तरफ मत देख, आराम से कॉपी किताब देखने लगो, ताकि हम बहुत बिजी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है? पुराने स्टूडेंट को तो देखते ही मुझे पता है, उसको तो पहले पूछना चाहिए। 1919 एक्ट। Women got reservation for the first time? 1919 एक्ट। 1919 एक्ट। In which act the number of provinces was made 11? Citizenship should be defined. Which provision? Nehru report. Right. Which act provided the indirect election? Indirect election. 1892. India Council Act 1890. Portfolio system was introduced in which act? Which act? 1861 Government of India Act. अच्छा, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको पार्लियामेंट बोलने लगे आगे चलकर, ये कब आया? 1861 India Council Act 1861. उन एक्ट में हमारा प्रोविजन क्या था? सेकंड प्रोविजन क्या था? The number of seats in the provincial legislature was double, 71 to 1. ठीक, आगे बढ़ो। मुझे मामला अटका बहुत, इतना नहीं अटका, क्या पूछ रहे हो? आप मतलब एवर प्लान तो इसलिए लाया था ना कि सपोर्ट मिल जाए लास्ट मोमेंट पे भी कांग्रेस को। कांग्रेस का सपोर्ट ब्रिटिश को। जापान इन्वेट करेगा तो अगर इंडियंस या कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी तो जापान को तो इंडिया में इजी एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अगर सपोर्ट करती है इंडियन या कांग्रेस तो जापान भी 10 बार सोचेगा। ठीक है ना, हमारा सपोर्ट है गवर्नमेंट, तो फिर दूसरा पावर इन्वेट नहीं करता। इसलिए थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वेजन। ठीक है बच्चे, राइट। तो हम लोग आगे कहानी शुरू करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं कैबिनेट मिशन। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर हम बातचीत अलग से करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने कास्ट मूवमेंट इन साउथ इंडिया, इन महाराष्ट्र पढ़ा है, कि इनकी नामनिकल मूवमेंट, राइट। तो उन सब चीज़ों पर देखेंगे तो मैं एक साथ उसमें मोर फैक्शन वगैरह पूछ रहे थे, पायलपुर फैक्शन है, तो कैसे श्री राजगोपालाचारी ने डोमिनेट करके इन दोनों को साइड किया। ये सब इनकी नामनिकल मूवमेंट्स को एक नजर एक बार से मानना पड़ेगा, सोशल रिलीजियस पार्ट और आजाद करवा लेते हैं। तो बातचीत ये है कि सिमला प्लान या वेबल प्लान हम लोगों ने करके दिया था, और उसके बाद इलेक्शन भी हुआ इंडिया में, और इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज नॉट विक्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग बट बेसिकली फेल्यूर ऑफ द कांग्रेस, बिकॉज पहली बार मुस्लिम लीग को 86.6% वोटिंग मिलके मुसलमानों का एक गजब का मोमेंटम क्रिएट हुआ है। तो आप रफली ये बोल सकते हैं कि मुस्लिम मिडिल क्लास वाज इन फेवर ऑफ मुस्लिम लीग, और कैसे कैसे मुस्लिम लीग ने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए थे कि अगर आप मुस्लिम लीग को वोट नहीं देंगे तो आपको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी और लड़के रहेंगे पाकिस्तान। बहुत तरह की बात हो गई। ओवरऑल देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ कैबिनेट मिशन, दोज पार्टी विल गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स विल बी इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, and Congress got the highest number of seats.
Therefore, Viceroy Babel will invite the leader of Congress, Jawaharlal Nehru, to become the Vice President of India. तो ये तो तय हो गया कि अब नेहरू जी इंडिया के फ्यूचर या फेट को डिसाइड करने वाले हैं, एंड ही विल बिकम द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। देखो कितनी चालाकी से ब्रिटिश काम कर रही है कि पहले तो इलेक्शन करवा के ये बता दिया कि मुसलमान जो है वो कांग्रेस को डिवीजन के फेवर में, दूसरा इस पूरे कॉम्बिनेशन की रिस्पांसिबिलिटी अब नेहरू के पास है, कैसे टैकल करेगा। तो जैसे ही उसको ठीक लगा कि नेहरू को इनवाइट किया जा रहा है, अभी जिन्ना ने एकदम डिमांड एस्केलेट कर दिया। जिन्ना ने बोला कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। तो जिन्ना के साथ पूरा धोखा हुआ। बंगाल में एक लीडर थे सुहरावर्दी, और ये बंगाली मुस्लिम्स अपने आप को थोड़ा एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे मुस्लिम लीग से। तो जिन्ना ने बोला कि हड़ताल ऑर्गेनाइज करना, तो इन लोगों ने पूरा तरह से प्लानिंग किया था कि हम वायलेंस करवाएंगे बंगाल, और शायद जिन्ना को इसका अंदाजा नहीं। तो 16 अगस्त 1946 में जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, उसमें देयर वाज अ मैसिव कम्युनल वायलेंस इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, पर्टिकुलरली इन बंगाल। ये वर्स्ट वायलेंस एंड द डेथ वाज अनपैरेलल्ड इन द ह्यूमन हिस्ट्री, और ये लगातार चल रहा है वायलेंस, रुकने का नाम नहीं। और इसी वायलेंट एटमॉस्फेयर वाइसरॉय बेबल हैड इनवाइटेड नेहरू टू बिकम हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। नेहरू का सत्ता में आना, अब सारी रिस्पांसिबिलिटी नेहरू की कि कैसे इस कम्युनल एटमॉस्फेयर को हैंडल करें। तो वैसे हालात में नेहरू ने एक चिट्ठी लिख करके पीपी मेनन के साथ, पीपी मेनन को भेजा इंग्लैंड, और उस चिट्ठी में मुस्लिम लीग की शिकायत की कि देखिए कैसे कैसे करना है, और साथ में ये भी बताया गया कि अगर माउंटबेटन को वाइसरॉय बना दे तो बात आसान है। नेहरू बहुत विजनरी कैरेक्टर के आदमी, क्योंकि नेहरू जानते थे कि अब अगला चैलेंज इंडिया का क्या है, राजा नवाब वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है यूनाइटेड इंडिया। तो वैसे हालात में नेहरू ऐसा समझ रहे थे कि ये जो माउंटबेटन है ये मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, ये भी खानदानी राजा है, और ये राजा लोग अपने आप को एक डिफरेंट मोनार्कियल ब्लड समझते हैं, मैं भी राजा, तू भी राजा। तो ये जो फीलिंग आती है, तो माउंटबेटन वुड बी द बेटर पर्सन जो कम्युनिकेट कर पाएगा इफेक्टिवली राजा नवाब से, और यूनाइटेड इंडिया और इंटीग्रेटेड इंडिया का कॉन्सेप्ट उनके होता है। तो माउंटबेटन को वाइसरॉय बना दीजिए, ऐसा बोल के भेजा था बीपी मेनन। बहुत सीक्रेट रखा गया था इस लेटर, क्योंकि माउंटबेटन को नेहरू को पता था कि जिस दिन ये लेटर लीक हो जाएगा और लीक हो जाएगा तो जिन्ना को लग जाएगा कि माउंटबेटन इज नेहरूज मैन, और जिन्ना जिस तरह से प्रीकंसीव्ड आइडियाज में जीता था उसमें माउंटबेटन को एक भी काम करने नहीं देगा, नेहरूज मैन का टैग लग, इसलिए इसको सीक्रेट रखा गया। ये बात तब सामने आई जब बीपी मेनन ने अपनी किताब लिखी द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, और उसने बताया कि हम चिट्ठी लेके गए थे। बहुत कम लोगों को पता, एक नेहरू को उसने लिखा, एक बीपी मेनन को जो लेके गया, एक एटली जिसके लिए लिखा गया, एक मैं जो आपको बता रहा हूँ। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी। देखो माउंटबेटन और नेहरू के बीच में बहुत क्लोजनेस थी, और ये क्लोजनेस स्टार्ट हुआ था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला, उसी समय ये क्लोजनेस स्टार्ट हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट में नेहरू अहमदनगर फोर्ट में बंद थे, तो माउंटबेटन पुणे आया, और पुणे करके उसने सोचा कि नेहरू से मिलते। पूरे ब्रिटिश सर्किल में इस बात का अंदाजा था कि इस आदमी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए सब नेहरू के साथ अपना टैग रखना चाहते थे। तो उसने प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर बोला कि मुझे नेहरू से मिलने जेल में जाना है। तो चर्चिल को आप जानते हैं, ऑनलाइन पर आ गया, उसने बोला यस। माउंटबेटन ने बोला सर कैन आई मीट नेहरू इन जेल। चर्चिल बोला कि मिस्टर माउंटबेटन, you are commander of the British Army. Your dignity is yours, but you must have the dignity of the post on which you are sitting. आप नेहरू से मिलने जाएंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, क्या आप बनाना चाहते हो उसको? वो ऐसा आदमी है रोज उसके जूते में ब्रिटिश जेल का डस्ट लगा रहता है, रोज जाता है मुझे, रोज भेजता हूँ मैं। तो नेहरू ने माउंटबेटन तो रॉयल फैमिली का आदमी था, वो चर्चिल से डरता नहीं था, उसने सीधा रिस्पॉन्ड किया, सर हमारे कमांड में लाखों इंडियन आदमी, उसके हाथ में भी डस्ट लगा रहता है, मैं रोज हाथ मिलाता हूँ उससे, एक इंडियन से मिलने में क्या प्रॉब्लम? चर्चिल ने रिस्पॉन्ड किया। जब नेहरू जेल से बाहर निकला तो सीधा सिंगापुर जाकर के माउंटबेटन से मिला, और शायद वहीं पर नेहरू और माउंटबेटन के बीच में काफी क्लोजनेस स्टार्ट हुई। तो एडविना काफी इंप्रेस थी नेहरू से। इस तरह से मतलब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन को लंबी छुट्टी दी, और एकदम ऐश करना था वॉर के बाद माउंटबेटन ने सरेंडर पर साइन करवाया था जापान से। हीरो था ऐसे भी वो हैंडसम स्मार्ट मैन ऑफ हीरो था, मिस्टर। अचानक से इटली की चिट्ठी मिली उसको कि आपका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वाइसरॉय के इंडिया में। माउंटबेटन बोला कि मैं छुट्टी में हूँ, इटली ने बोला छुट्टी कैंसिल भी होती है। तो माउंटबेटन जब मिलने आया प्रधानमंत्री से, उससे पहले वो ब्रिटिश किंग से गया, जॉर्ज सिक्स्थ, जो उस समय ब्रिटेन का किंग है और रिलेशन में उसका भाई लगता है। तो जॉर्ज सिक्स्थ से मिलने गया तो बोला कि भाई अपने प्राइम मिनिस्टर को बोलो ना कि मैं जो है वाइसरॉय नहीं बनना चाहता, प्रॉब्लम है, मैं छुट्टी पर। तो जॉर्ज सिक्स्थ क्या बोलता है कि हमारा अपॉइंटमेंट हो गया? हाँ ये तो है, क्योंकि हमारे प्रीडेसेसर गए थे जॉर्ज सिक्स्थ, वहाँ पर ग्रैंड दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ, 5 लाख लोग आए थे, मैं नहीं गया पाया। इट हैपेंस ओनली, तुम रहोगे ना वहाँ पर, मैं जरूर आऊँगा। माउंटबेटन समझ गया कि इस आदमी की प्रायोरिटी अलग है, ठीक है, और बेकार बात करना है। वापस घर आया तो उसने एडविना को कि मेरा अपॉइंटमेंट हो गया वाइसरॉय इंडिया, मैं जाना नहीं चाहता, मैंने डिसाइड नहीं किया। एडविना ने पैकिंग स्टार्ट कर दिया कि मैंने डिसाइड करना इंडिया आने का, उसके पास एक्साइटमेंट के रीजन होंगे, बट उसने पैकिंग शुरू कर दी। तो लास्ट में माउंटबेटन प्रधानमंत्री के पास गया और बोला कि मेरा एक बार लास्ट अपना पत्ता फेंक के देखते हैं, कहीं मान जाए आदमी। उसने बोला कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आई एम रेडी टू बिकम वाइसरॉय, बट रिमेंबर वन थिंग, आई विल नॉट कम डायरेक्टली इंडिया टू इंग्लैंड एंड इंग्लैंड टू इंडिया टू डिस्कस एनीथिंग, आई विल गो, आई विल सी एंड आई विल डिसाइड। माउंटबेटन को लगता था कि इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी एक आदमी के हाथ में देकर के ये प्रधानमंत्री कभी नहीं भेजे,
क्योंकि इंडिया वाज द बिगेस्ट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन हुआ ऐसा सिविल वॉर होगा इस जगह पर जो सीरिया और इराक में ना हो। इसलिए माउंटबेटन ने सोचा कि बोल के देखते कि मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, मैं डिसाइड करूंगा मैं भारत इंग्लैंड इंडियन इंडिया इंडियन इंग्लैंड। एक ही चेयर पर से उठा, एक राउंड लिया ऑफिस का, दूसरा राउंड लिया और फिर जाके चेयर पर बैठ गया और बोलता है कि ओके इस तरह से माउंट शायद सोच रहा होगा कि शायद इंग्लैंड में कौन ऐसा आदमी है जिसको भेजना चाहिए, बट एनीवे उसको कोई मिला नहीं। और माउंटबेटन की बात तो माउंटबेटन नाउ बिकम द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एंड नाउ ही इज एंटरिंग इन द न्यू फेज। कन्वेंशन था कि एक वाइसरॉय गेटवे ऑफ इंडिया से निकलता था, दूसरा इंडिया, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई को बनाया। एक समय में दो वाइसरॉय रहते नहीं थे, मगर माउंटबेटन ने आउटगोइंग वाइसरॉय लॉर्ड वेबल को बोला सर प्लीज स्टे इन ऑफिस, आई वांट टू डिस्कस समथिंग व्हिच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर माय वाइसरॉय। वेबल अपना कैलेंडर में डेट कट कर दिया लास्ट और उसे रुका। ये जो प्रेसिडेंट हाउस है जहाँ पर डॉक्टर मैंडर उसके कॉरिडोर में फाइल लेके घूम रहा था और माउंटबेटन किसी चढ़ा अगले सर ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं। वेबल ने उसको खोल के देखा, अगला ये लो सिग्नेचर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नाउ यू आर वाइसरॉय। और बोला कि ये मत सिचुएशन इन इंडिया इज नॉट बैड बट वेरी वर्स्ट। और इतना बोल करके वो तेजी से निकल गया सीरियसली। माउंटबेटन अपनी किताब में लिखता है ऑटोबायोग्राफी में, the way that he was walking down steps, he was running, and I have realized that coming days are not good. इतनी तेजी से ये भाग रहा है ना, लगता नहीं कि आने वाले दिन अच्छे हैं। कि कोई कैसा थोड़ी ना भागता। वापस गया, ऑफिस चला गया पूरा, मिलिट्री आदमी। ऑफिस गया तो सेक्रेटरी ने फाइल ली, सिग्नेचर करवाया और दूसरे हाथ से बोला कि सर एक इमरजेंसी फाइल है इसको देखिए। माउंटबेटन बड़ा हैरान हुआ कि अभी तो मैं आया हूँ, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, बोला सर बहुत इमरजेंसी है। तो फाइल खोला, देखा एक आदमी को डेथ पेनल्टी दी और उसको लटकाने की तैयारी चल रही है और वाइसरॉय के पास मास्टर पिटीशन भेजा गया। तो जल्दी देख लीजिए आप, यस नो कर दीजिए, नहीं तो कभी लटका देंगे। तो उसने फाइल ओपन किया, देखा कि उस आदमी ने अपनी वाइफ को पीट पीट के मारा और सारे कोर्ट में डेथ पेनल्टी भी दे दी वाइसरॉय के सामने बस पिटीशन। तो माउंटबेटन ने उसके कवर पेज पर लिखा कि आई डोंट फाइंड एनी लॉजिकल रीजन टू गिव मर्सी टू दिस पर्सन और उसके डेथ पेनल्टी पर साइन। अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि फर्स्ट मिनट इन माय ऑफिस आई वाज साइनिंग डेथ पेनल्टी ऑफ एन इंडियन, व्हाट एल्स आई कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, इट वाज रियली वेरी बैड थिंग, बहुत बुरी बात है। एडमिन ने बोला कि नेहरू क्या चल रहा है, बोला नेहरू क्या क्यों चलना है, आज तक कोई इंडियन लीडर कोई वाइसरॉय किसी इंडियन लीडर के घर में नहीं गया, प्रोटोकॉल नहीं है। तो एडमिन तो बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर की, व्हाट इज प्रोटोकॉल, लेट्स गो। माउंटबेटन को लगा कि बेकार बात करनी है, बोला चलिए नेहरू का 3 मूर्ति भवन जो दिल्ली में, वहीं पर नेहरू रहते। तो नेहरू जो है सोशल मीडिया वाइसरॉय आ रहे हैं, सारे लीडर्स वहां पर इकट्ठे थे कि पहली बार वाइसरॉय किसी इंडियन लीडर के घर में आया। एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो था, माउंटबेटन भी इंडियन लीडर्स के कंधे पर हाथ रख करके कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था और नेहरू भी काफी बिजी हो गया, मैडम चाय, मैडम कुरकुरे, मैडम मोमोज, सो ऑल टाइप ऑफ स्टफ्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो माउंटबेटन ने 4 लोगों की लिस्ट बनाई बिफोर ही विल कंक्लूड एनीथिंग। पहला नाम था गांधी, दूसरा पटेल जो होम मिनिस्टर थे और पटेल माउंटबेटन को बिल्कुल पसंद नहीं, तीसरा नाम नेहरू का और चौथा नाम था जिन्ना। ये 4 लोगों की लिस्ट है, केवल 4 आदमी से बात करना है, किसी दूसरे से बात करना है। तो गांधी को सर्च किया गया। अब नेहरू को ये नहीं पता था कि गांधी कहाँ है। गांधी चंपारण में थे जहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की। महादेव देसाई की डेथ हो गई थी, तो नया सेक्रेटरी बनाया था प्यारेलाल। तो प्यारेलाल गांधी पर भी चढ़ा रहे थे, तो प्यारेलाल था कि सब वाइसरॉय का टेलीग्राम आ रहा है, आपसे मिलना चाह रहे हैं। इतना एक्साइटेड क्यों, वाइसरॉय का टेलीग्राम, ठीक है ना, क्या फायदा होगा मिलके, 4 दिन लेट रिस्पॉन्ड करो, जवाब दो कि आप अपना काम करिए, मैं आके आपसे दिल्ली में मिलूं, ऐसे भी कुछ होना नहीं है। गांधी का गुस्सा, 78 years of man, काफी किस्मत। गांधी काफी रोजगार करवाने के बाद गांधी और माउंटबेटन की मुलाकात बहुत हिस्टोरिक है। दोनों को देखिए, माउंटबेटन हैंडसम स्मार्ट मैन ऑफ यूरोप, मिस्टर यूरोप, एकदम नबल बैच लगाए बगैर घर से निकलता नहीं था, पूरे वेल ड्रेस्ड, और अपना गांधी मिस्टर इंडिया। उनका ड्रेस वही था जो 1921 में पहना था उन्होंने और इतना पतला पतला। डिफरेंस ये भी देखिए कि माउंटबेटन प्रोफेशनल मिलिट्री है, मेकर ऑन लाइफ गॉन, और अपना गांधी वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस। मगर एक सिमिलरिटी बहुत कॉमन थी कि दोनों कम्युनिकेशन इंजीनियर थे, माउंटबेटन बाय डिग्री एंड गांधी विदाउट डिग्री। माउंटबेटन बीटेक और यहाँ से बस के पास गया, देखिए मेरठ से नहीं तो बीटेक, तो माउंटबेटन बीटेक हमेशा ऐसे डिवाइस बनाते थे जिससे कि वो अपनी मिलिट्री को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता। और गांधी बिना किसी डिवाइस बिना किसी इंस्ट्रूमेंट वो वायरलेस कनेक्शन बनाया था कि 40 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का कनेक्टेड था इस से। ये बोलता था और 40 करोड़ पॉपुलेशन रिस्पॉन्ड करता। इस तरह का वायरलेस कनेक्टिविटी इस धरती पर रहा था। ये सोशल इंजीनियरिंग किसी बीटेक से नहीं आता, तो शानदार कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया और माउंटबेटन इस बात पर माउंटबेटन अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मैं इस आदमी का इंपॉर्टेंस इस बात के लिए नहीं दे रहा हूँ ये मुझे कोई सॉल्यूशन देगा, इंपॉर्टेंस इस बात के लिए दे रहा हूँ कि जब मैं कोई सॉल्यूशन दूँ इस पर ये पानी है। पिछले 30 साल से इसने ब्रिटिश के साथ एक ही काम किया, ब्रिटिश प्रपोजिंग, इट इज सॉल्यूशन कहाँ से देगा, सॉल्यूशन है नहीं इसके पास, मगर सॉल्यूशन तक जाने की जो चाबी है ना ये केवल इसके पास। तो माउंटबेटन का ये कहना था कि इस आदमी के पास चाबी तो है जाने की सॉल्यूशन, अगर इसके आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाए। गांधी आ गया, लंबी बातचीत हुई, बड़े उदास बिहार से आ रहे थे चंपारण से, रास्ते में किसी ने उनकी घड़ी चुरा ली। ऐसा गांधी उसमें गांधी लेटर की किताब में लिखते हैं, घड़ी उनकी खो गई। इंगर सोल वास्ता कमर में बांधने वाली ऐसे लटकते रहते। गांधी बहुत फैशनेबल आदमी थे, जब लंदन में पढ़ते थे तभी उन्होंने घड़ी खरीदी। इतना नया फैशन चला था कमर में बांधने वाली घड़ी, तुरंत खरीद लियो और ऐसे उठा के देखते थे ना, बड़ा स्टाइलिश था। उनको बहुत इंपॉर्टेंस देता था। मेरे बाल अगर ठीक से सेट नहीं होते थे तो मैं कॉलेज ही नहीं जाता। तो इस तरह से कई सारी बातें थी गांधी के बारे में। तो उसने पूछा कि सर आप सैड क्यों? बोला मेरी घड़ी खो गई।
बाईस तो कुछ भी नहीं था उस घड़ी का, मगर मेरे जीवन में क्या क्या हुआ है केवल उस घड़ी को मालूम। माउंटबेटन को लगा कि इमोशनल बात है, इमोशनल अगर हावी हो जाएगा तो काम की बात हो नहीं पाएगी। उसने सोचा ध्यान बदलते हैं गांधी का, सीधा सवाल हिट किया गांधी, मिस्टर गांधी हु आर यू। इतना सवाल पूछते ही गांधी अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से, ठीक है, वो धक्का दे दिया, ट्रेन से गिर गए। 2 घंटे तक लगातार यात्री बोलता रहा। माउंटबेटन उनकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं, बोला लंच टाइम हो गया, तो गांधी भी अपना लंच बंच निकाला, माउंटबेटन भी निकाली। बहुत स्टोरी है इस लंच में, उतना दूर तक नहीं ले जाना। फिर बहुत खतरनाक है, बकरी के दूध की दही लेकर के गांधी गए और चम्मच में लकड़ी बांधा हुआ क्योंकि चम्मच के हैंडल, और उसने वायसराय को बोला कि ये दही टेस्ट करो। वायसराय लिखता है अपनी माउंटबेटन किताब में कि दुनिया का कोई दूसरा आदमी होता मैं 1 मिनट में नो लंच में बोलता कि मैं नहीं खाऊंगा, मगर गांधी को मैं मना नहीं करता, और मैंने वो स्पून उठाई और आंख बंद करके मुंह में रख लिया। बहुत शानदार है, डोमिनिक लेबर की किताब में सारी बातें लिखी है जो मैं बोल रहा हूँ, मिडनाइट, शानदार डिस्क्रिप्शन, और भी बहुत सारी बातें जो एकदम उस माहौल को बताता है कि गांधी। एनीवे 2 घंटे के बाद गांधी को खाना खा लिया, होता है कि मुगल गार्डन में, सॉरी अमृत हो गया, प्रेजेंट हाउस अमृत, तो बोला पीछे से गेट खोला, निकल गया मुगल का, बिना भाग गया कि मुझे भी फ्लावर देखना, मुझे भी फ्लावर देखना। तो माउंटबेटन ने बोला आप तो हीरा दिया रोज देखते हैं फ्लावर, बोला नहीं गांधी के साथ तो नहीं देखते। और गांधी और एडविना बात करते रहे, कंधे पर हाथ रख करके वो पूरे गार्डन में घूम रहे थे। माउंटबेटन इंतजार कर रहा था कि इनका घूमना बंद हो तो फिर बातचीत शुरू करें। वो बैठ गया, ये दोनों बात करते रहे और आधा घंटा 1 घंटा बीत गया। माउंटबेटन बोला कि बोलना पड़ेगा सर, बातचीत करें दोबारा। पूरे शाम कुछ भी नहीं बात हो पाई। माउंटबेटन की हिम्मत नहीं जुटा पाया ये बोलने का कि पार्टीशन इज द ओनली सॉल्यूशन। गांधी बोले कि मैं ये बिरला कैंटीन में रुकता हूँ, आपको जब जरूरत होगा मुझे बुलाइए। संडे को नहीं बुलाइएगा क्योंकि मेरा मॉर्निंग, संडे को टोटल म्यूट होता है, साइलेंट कर देते थे। उसके बाद बारी आई पटेल की, होम मिनिस्टर। मैंने बताया पटेल पसंद नहीं करते माउंटबेटन ने 2 ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को होम मिनिस्ट्री में लगा दिया। सीधे रिपोर्ट पटेल ने जबरदस्त चिट्ठी लिखी, बिना एड्रेस के लिखा कि और विदाउट कंसल्टिंग होम मिनिस्टर वाइसराय कैन अपॉइंट एनीबॉडी इन द होम मिनिस्ट्री। लैंग्वेज ठीक नहीं था चिट्ठी। माउंटबेटन ने चिट्ठी निकाली और बोला कि मिस्टर पटेल योर दिस लेटर टू माय आई विल इमीडिएटली गो बैक टू इंग्लैंड एंड टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर गवर्नमेंट। पटेल को लगा कि कहीं आदमी चला गया नहीं। पहली बार ब्रिटिश की जरूरत महसूस हुई थी देश में, तो हालात पटेल ने उस चिट्ठी को फाड़ के पॉकेट में रख दिया। फोटो खिंचवाया वाइसराय की फैमिली, गांधी भी खिंचवाई, पटेल भी। तीसरा नंबर था नेहरू। अब ये सरकार में नंबर 2 है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2 सितंबर 1946 को इन्होंने वो किया है, सारा चिट्ठी लिखा। नेहरू आए, टोपी लगा के आए थे, साइड से उनका बाल निकल गया था तो ढकने के लिए टोपी टेढ़ा करके बांधते थे, और इसको हम लोग बोलते हैं नेहरू कैप। एक्चुअली वो बाल्डनेस रखते थे, उनका गंजापन ना दिख जाए, बाल उड़ गया था साइड से। नेहरू आए, माउंटबेटन ने गुलाब लगा दिया। तो माउंटबेटन को बोला कि मुझे लगता है कि पार्टीशन कर देना चाहिए देश में। तो नेहरू एकदम हॉस्ट कर दिया, बोला कि क्या बात करते हैं, मैं ये बात कब से बोल रहा हूँ, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, ठीक है, यही सॉल्यूशन मुझे भी दिख रहा है। नंबर 2 एंड मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया, ये पार्टीशन के फेवर में है। माउंटबेटन ने उसको दोबारा हिट किया, बोला कि आप एग्री, आपके और भी पार्टी मेंबर्स एग्री होंगे। क्या सभी लोग एग्री हैं? इशारा गांधी की तरफ था। नेहरू और गांधी के बीच में डिफरेंस देखो कितना ज्यादा बढ़ गया। बोला कि हमारी पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब गांधी की तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि शरीर के एक घाव को ठीक करने में भरोसा रखते हैं, पूरे शरीर को ठीक करने में इनका भरोसा नहीं है। जहाँ जाते हैं वायलेंस होता है, जहाँ जाते हैं वायलेंस कम हो जाता है, दूसरी जगह हो जाता है। क्या फायदा वैसे वायलेंस बंद करने का जो बंदी नहीं। गांधी और नेहरू के बीच में डिफरेंस साफ साफ है। तो नेहरू जाने लगे, माउंटबेटन ने बोला मिस्टर नेहरू, डोंट कंसीडर मी एज अ वाइसराय who came here to pack up the British rule. I came here to begin new India. नए भारत के निर्माण के लिए मैं आया। बहुत स्मार्ट आदमी, आप मुझे ऐसे रिसीव करेंगे तो मेरा काम आसान है। उसके बाद चौथे नंबर पर था जिन्ना। अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है माउंटबेटन, मैं इस आदमी के बारे में सुना बहुत था, मिला कभी नहीं। जब मैं इससे मिला तो मुझे महसूस हुआ कि इंडिया और हिंदूज के लिए कितनी नफरत क्या है इसके बारे, बहुत ज्यादा नफरत थी जिन्ना को, हिंदूज के, इंडिया के। जिन्ना गुजराती था, जानते ही, हाँ, और गुजराती के अलावा उसने कभी हिंदी, कभी उर्दू, फारसी सीखी नहीं, और जब से इंग्लिश बोली गुजराती कभी बोली नहीं। हाईली एंग्लिसाइज्ड मैन था। ऐसा वो सब काम करता था जो एक सामान्य मुसलमान नहीं करता। रिलीजियस, ईट एवरीथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ड्रिंक एवरीथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, तो वो सब चीज करता था, बट वो मुसलमान का नहीं था। और हमारे पास एक मौलाना थे, अबुल कलाम आजाद, जो शायद ही कोई ऐसा काम करे जो नॉन इस्लामिक हो, उसको वो मुसलमान नहीं करते। ये हमारे देश के मुस्लिम का नेता कौन है? ठीक है, एक डिवोट मुस्लिम नेता नहीं है, एक हाईली अन इस्लामिक आदमी नेता। हम कभी जब बोलते हैं कि ये लोग बहुत अलग है, तो आपको लगता है ऐसा क्यों बोलते हैं? तो इन सभी बातों से प्रूव होता है कि हम लोग अलग। तो जिन्ना ने सोचा कि अगर माउंटबेटन हैप्पी है तो पाकिस्तान है, इसलिए मीटिंग में इस आदमी को खुश करना बहुत ठीक है। बोला कि माउंटबेटन हैप्पी तब होगा जब एडविना हैप्पी, क्योंकि जब एक इंडियन लीडर जाते थे एक फोटो सेशन तो बीच में हमेशा एडविना होता, गांधी, पटेल, नेहरू। तो माउंटबेटन ने सोचा कि जैसे ये मोमेंट आएगा, एक शानदार पोएट्री एडविना के लिए सुना। जो उस पोएट्री का जो लास्ट लाइन था वो था, 2 कांटों के बीच में गुलाब, मतलब एडविना को रोज बोलना है और बाकी दोनों को काटो। ये पूरा रट के गया था, मगर जब फोटो सेशन स्टार्ट हुआ ना तो सीक्वेंस चेंज हुआ। माउंटबेटन, जिन्ना और एडविन, बीच में जिन्ना आ गया, और बीच में जिन्ना और उसने वही पोएट्री बोल डाली वहां, मतलब दोनों को काटा बोल के खुद तो गुलाम बोल गया। तो जिन्ना वही स्टूडेंट था जिसने आंसर तैयार किया था, चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, वो लिख के तैयार जब तैयार किया तो लिखेंगे, क्वेश्चन आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं। तो सारे लोग वॉच लाते और माउंटबेटन तो चेयर पर बैठ गया कि बहुत शानदार आदमी लगता है। तो फाइनली माउंटबेटन ने बोला कि मिस्टर जिन्ना, वी हैव कंसीडर्ड पाकिस्तान। और माउंटबेटन तुरंत मैप निकाल के
नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट को राउंड कर दिया, बोला यह है पाकिस्तान। तो जिन्ना के मुंह से निकला, या तो उसने साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान बोला या नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान, कीमत लगा हुआ पाकिस्तान बोला या झूठा पाकिस्तान, तो में से एक वर्ड उसने यूज किया। तो जैसे बोला ना कि ये कीमत लगा हुआ पाकिस्तान है या झूठा पाकिस्तान है, उसको पूछा क्या फिर आप क्या सोचते हैं? बोला कि हमको पूरा पंजाब दीजिए। पंजाब पूरा का मतलब समझते हो, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ तक हमें पाकिस्तान चाहिए। पॉपुलेशन अगर ट्रांसफर होता है तो अच्छी बात है, बंगाल से पॉपुलेशन इधर आ जाए। और बेटर मन सोचा 5 करोड़ पॉपुलेशन बंगाल से उठा करके पंजाब और पंजाब से उठा करके हिंदू और सिखों को बंगाल, इतना बड़ा पॉपुलेशन ट्रांसफर तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में नहीं हुआ, और इतना बड़ा रिस्क लेगा कौन? माउंटबेटन ने सीधा बोल दिया कि रिजेक्टेड, ये हमें नहीं कर पाएंगे। हमारे मन माउंटबेटन सोचा होगा कि आगे इधर आओ, आगे उधर जाओ, ट्रैफिक पुलिस क्या रोल देती है जिसने नहीं भाई। फिर जिन्होंने पूछा कि अगर ये पाकिस्तान है दोनों साइड, तो हमको बीच से रास्ता दे दीजिए, राइट, यूपी होते हुए आधा इंडिया उधर आधा इंडिया, हम पाइप से आएंगे, पाइप से। माउंटबेटन का मिलिट्री स्टाइल जाके उसने बोला कि मिस्टर जिन्ना, दिस इज ओनली पाकिस्तान ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज कंप्लीटेड, इफ यू डोंट वांट पाकिस्तान, फॉरगेट पाकिस्तान, विल हैव सम अदर सॉल्यूशन, हमारे पास टाइम है। किस बात का टाइम है? प्रधानमंत्री एटली ने साफ साफ बोल दिया था कि डेट है हिस्टोरिक पार्लियामेंट में 20 फरवरी 1947 कि ब्रिटेन जून 1948 से पहले इंडिया से एग्जिट कर। प्राइम मिनिस्टर ने जून 1948 का डेडलाइन दिया है और अभी तो मार्च अप्रैल चल रहा है 1947, हमारे पास 1 साल से ज्यादा टाइम। हम सॉल्यूशन अब जिन्ना को था टीवी में निकल पड़ा था, वो 1 साल रुकेगा नहीं रुकेगा, इसके बाद वो पाकिस्तान देखना चाहता है। वैसा आदमी जो कल बनने वाला हो, उससे अगर किसी देश का भविष्य लिखवाया जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं वैसा ही देश होगा जैसा पाकिस्तान आज है। ये फंडामेंटल डिफेक्ट है उसके फॉर्म से, वरना इस आदमी के जिद के चलते पाकिस्तान के अलावा कोई बात हुई नहीं। और ये एक ही पॉइंट पर रखा था कि नहीं पार्टी दीजिए, तो इनको तो देश गिराना नहीं था, तो जानते थे कि बस आज या कल तो जो हेट के बेसिस पर स्टेट बनता है उसका एग्जिस्टेंस कैसा हो, हेट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ। तो जिन्ना की बात हो गई, जिन्ना बोला था कि ये पाकिस्तान लेकर के हम बहुत मुश्किल में है, हम मुस्लिम लीग मीटिंग में बात करेंगे, बोले कि आप दिल्ली चेंज नहीं कर सकते, मुस्लिम लीग जिन्ना जिन्ना मुस्लिम लीग 3 जून 1947 ऑल इंडिया रेडियो आ जाएगी और वहां पर हम पार्टीशन प्लान अनाउंस करेंगे। इसी 3 जून प्लान को माउंटबेटन प्लान और 3 जून प्लान को, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। लास्ट में हमने क्या लिखा है? कैबिनेट मिशन प्लान, राइट, कैबिनेट मिशन प्लान। उसमें लास्ट हमने पॉइंट लिखा है कि दिस प्रोविजन वाज फॉर 10 years, आफ्टर 10 years एनी प्रोविंस और द ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस मे फॉर्म सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। इन द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, in the election of constituent assembly, in the election of constituent assembly, Congress got highest number of seats. Congress got highest number of seats. Therefore, Viceroy Bebel had invited leader of Congress party, Mohammed Jawaharlal Nehru, leader of Congress party Jawaharlal Nehru, to form an interim government. To form got highest number of seats. Therefore, Viceroy Bebel had invited leader of Congress party, Mohammed Jawaharlal Nehru, leader of Congress party Jawaharlal Nehru, to form interim government. Meanwhile, Jinnah was not ready to wait for interim government. Jinnah demanded separate constituent assembly for Pakistan. On 16th August 1946, Direct Action Day was started. It was Pakistan. On 16th, Direct Constituent Assembly for Pakistan. On 16th August 1946, Direct Action Day was started. It was provocation of communal violence. Demanding Pakistan. The worst violence was in Nawakhali. Direct Action Day was started.
It was provocation of communal violence. Provocation of communal violence. Demanding Pakistan. Provocation of communal violence demanding Pakistan. The worst violence was in Nawalhari, Bengal. Nawalhari, Bengal. ठीक है, हेडिंग दे दीजिए छोटा सा. Interim government. On 2nd September 1946. On 2nd September 1946. Jawaharlal Nehru became the Vice President of India. His oath ceremony was facilitated by Lord Webber. Initially, Muslim League refused to participate in interim government. But after persuasion, facilitated by Lord. Initially, Muslim League refused to participate in interim government. But after persuasion, initially, Muslim League refused to participate in interim government. But after persuasion of Mountbatten, Muslim League agreed to join the government. Three members of Nehru's cabinet to join the government, interim government. But after persuasion, initially, Muslim League refused to participate in interim government. But after persuasion of Mountbatten, Muslim League agreed to join the government. Three members of Nehru's cabinet. Safat Ahmad Khan, Ali Zahir, members of Nehru's cabinet. Safat Ahmad Khan, Ali Zahir, Sarat Chandra Bose resigned to facilitate the members of Muslim League. Liaquat Ali Khan resigned to facilitate the members of Muslim League. Liaquat Ali Khan became the finance minister. From the side of Muslim League. Muslim League बिल्कुल तैयार नहीं था ज्वाइन करने के लिए. बाद में बहुत लोगों ने परसुएट किया. अभी रिलक्टेंट ही रहा था. बाद में किसी ने काम में जाकर के बोला फाइनेंस मिलेगा, तुरंत तैयार हो गया. पाकिस्तान को तो फाइनेंस सबसे कितना प्यार जानते हैं, तो तुरंत तैयार हो गया. लियाकत अली खान बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट. अब देखो ये लोग वायलेंस भी कर रहा है और मंत्री भी बन गया, इसलिए इसको स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस बोलते हैं. ये लोग वायलेंस भी कर रहा है और मंत्री भी बन गया. आर एस नहीं आ रहा, आज भी पता नहीं, आज भी अच्छी समझ तो वायलेंस मंत्री भी बन गया. स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस है. ये जो शरद चंद्र बोस है ना, ये बड़े नाराज थे. हालांकि मुस्कुराते हुए कैबिनेट से निकाला गया, पर इनकी नाराजगी का आलम बहुत जबरदस्त. बंगाल में एक लीडर था सुहरावर्दी, जबरदस्त आदमी था मुस्लिम लीग के बाद. तो इन दोनों ने मिलकर के एक फॉर्मूला ड्राइव किया, शरद सुहरावर्दी फॉर्मूला बोलते हैं. क्या फॉर्मूला बनाया? होता है कि बंगाल एक अलग कंट्री बनेगा, ठीक है, और उसका नाम रखेंगे यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ बंगाल. सो यूएसबी का फॉर्मूला रखें. तो बोला कि यूएसबी का क्या फॉर्मूला है? बोला कि पहले तो बंगाल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे,
इसमें 16 मुस्लिम होंगे और 14 हिंदू। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें कि मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होगा, हिंदू होम मिनिस्टर। पॉपुलेशन के हिसाब से असेंबली में सीट एलोकेट किया जाएगा। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ था जिसको बोलते हैं शरद-सोहरावर्दी फॉर्मूला, एंड दे प्रोजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूएसबी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। तो वही है यूएसए एंड यूएसबी। अभी भी आप सोच सकते हैं कि कैसे ना इस देश में कैसे क्या क्या हो रहा था, अभी भी ऐसे ही उथल-पुथल चल रहा था। कहानी इतना कम, यहाँ पर हर एक दिन प्रोपेगेंडा हुआ कि नहीं हुआ, र्यूमर फैला कि नहीं फैला, एडवेंचर, एक्साइटमेंट सब खोज रहे हैं। नौकरी कोई नहीं, लाइक आमिर ये सब खोजेगा, जानता है लेकिन जो काम कर रहे हैं उसमें नौकरी मिली नहीं दुनिया में। एडवेंचर, एक्साइटमेंट, र्यूमर, प्रोपेगेंडा, इसमें दिलचस्पी इतनी है इस देश की। तो माउंट बैटन इसमें थोड़ा सा एटलीस्ट डिक्लेरेशन, 20th February 1947, Prime Minister Italy announced in Parliament about the future of India's relation with England. Future of India's relation with England. Announced in Parliament about the future of India's relation with England. Future of India's relation with England. Britain would leave India. Britain would leave India before June 1948. Before June 1948. Britain would leave India before June 1948. They also announced the appointment of Lord Mountbatten as new Viceroy of India. Lord Mountbatten as new Viceroy of India. New Viceroy of India. The 3rd June plan or Mountbatten plan. इसी को डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं। तो 3rd June plan, Mountbatten plan. New Viceroy Mountbatten had series of conversation. New Viceroy Mountbatten had series of conversation with Gandhi, Patel, Nehru, and Jinnah. He concluded the 3rd June plan. Gandhi. New Viceroy Mountbatten. New Viceroy of India. ठीक है, अरे जब हेडिंग दीजिए 3rd June plan. तो 3rd June plan, Mountbatten plan. New Viceroy Mountbatten had series of conversation. New Viceroy Mountbatten had series of conversation with Gandhi, Patel, Nehru, and Jinnah. He concluded the 3rd June plan. With the idea, with the following points. First point. India and Pakistan will be two independent federations. Within the British Commonwealth. India and Pakistan will be two independent federations within British Commonwealth. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंडिया फाइनली गॉट द डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि लाहौर रिजोल्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट में लाहौर रिजोल्यूशन भी डिमांडेड, बट विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज. सो फाइनली इंडिया गॉट डोमिनियन स्टेटस. सेकंड पॉइंट देख सकते हो आप. सो फाइनली इंडिया गॉट डोमिनियन स्टेटस. अब सवाल उठेगा कि क्यों लिया डोमिनियन स्टेटस, तो इस पर बात करेंगे थोड़ी देर. सेकंड पॉइंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब. Based on demography, the Muslim
Third, there will be referendum in NWF. There will be referendum based on demographic. Third, there will be referendum in NWF and Sinhat district of Assam. There will be referendum in NWF and Sinhat district of Assam. Both Western Frontier province and Sinhat district of Assam. ये किधर जाएगा? ये इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा? सिनहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। अब ये पाकिस्तान में चला गया, और अभी बांग्लादेश में तो NWF पाकिस्तान में चला गया, बांग्लादेश में। Next, a boundary commission will be constituted. A boundary commission will be constituted under Red Cliff. A boundary commission will be constituted R8 Red Cliff to demarcate the boundary between India and Pakistan. Next, official asset of India. To be divided equally between India and Pakistan. Official assets समझते हैं ना? पेपर, पेन, पेंसिल, ऑफिस में जितना भी चीज है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, that to be divided between India and Pakistan. तो ये था थर्ड जून प्लान on the asset of India to be divided equally between India and Pakistan. Official assets समझते हैं ना? पेपर, पेन, पेंसिल, ऑफिस में जितना भी चीज है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, that to be divided between India and Pakistan. तो ये था थर्ड जून प्लान on बैटन काफी खुश हुआ, सिग्नेचर करवा के लीडर्स ऑफ कांग्रेस ऑफ दिल्ली और फिर सीधे लंदन और प्राइम मिनिस्टर इटली के टेबल पर बोला हुआ था, निपटा दिया। इटली ने भी बिना किसी देखे उसको पार्लियामेंट में लगा दिया डिस्कशन के। और 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट had passed Indian Independence Act. 18 जुलाई 1947 and after this act British paramountcy in India was over. प्रभु सत्ता समाप्त। अब टेंशन था कि जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनको बोला गया कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में चेयर टेबल ये सब की काउंटिंग कर लीजिए। तो ऑफिस से जितने बाबू लोग थे तो चेयर टेबल को निकाल के लाए बाहर। तब चलाक होता है, घर से अपना टूटा हुआ टेबल लिया, नया वाला लेके, ठीक है, काउंटिंग तो करवाना है, काउंटिंग हुआ। सबसे ज्यादा मजेदार हुआ कि जब वाइसराय के एसेट, तो वाइसराय मैंने एक गाड़ी पर चलता था, इसमें 4 घोड़े लगे, तो घोड़ा तो मार सकते दो करके। गाड़ी के लिए टॉस हुआ था, और टॉस जीतने में इंडिया उस वक्त बहुत आगे था, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान नहीं था। ये लगातार 16 बार टॉस किया, 12-14 बार, कुछ ऐसा ही है। हाउ मेनी टाइम्स? स्ट्रेट में 14-15 बार टॉस हार गया। कहता है बताना चाहिए कि अगर इसमें आप इतफाक नहीं रखते तो आप बिजनेस के नाते 40-50 टाइम्स ही लॉस्ट। मगर उस समय एकदम सिक्का उठा सके टॉस कर, और इसलिए अभी म्यूजियम में रखा हुआ है अपना गाड़ी। एक पिन पाइप होता था जो वाइसराय असेंबली में एंटर करता था ना, फूका जाता मेंबर्स को इलेक्ट करने। तो उसके लिए इंडिया पाकिस्तान की डेलीगेशन लड़, और पाकिस्तानी डेलीगेशन टॉस करने के लिए तैयार नहीं था। ये नहीं टॉस नहीं करेंगे, मार जाते हैं, हमको दे दो ऐसे। और ये बार-बार सिक्का उछाल रहा है पास कर। ये बिल्कुल सोले टाइप का सिक्का होगा, मैं बता रहा हूं। कितना कॉन्फिडेंस। फाइनली जो सेक्रेटरी था वाइसराय का वो दौड़ गया, बोला क्यों लड़ाई कर? बोला कि पाइप के लिए लड़ाई कर। बोले काम करो, सॉल्यूशन दो, बताओ मुझे दे दो इसको। और बोले कि इंग्लैंड चला। तुमने क्या किताब में सारी बातें लिखी हुई है, पढ़ना कभी शौक से, पढ़ाई का शौक है। बाकी चीजें तो हास्यास्पद है इस बात को बोलने में। बहुत शानदार किताब है, आज ही ले लीजिए उसको। अगर 2 साल की एग्जाम देना है तो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स क्रिएट करेगा आपकी किताब में पढ़ने के लिए। तो इस तरह से डिवीजन आगे लिखना है। द थर्ड जून प्लान वाज प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। मुझे दे दो इसको, ये पाइप बिल्कुल सोले टाइप का सिक्का होगा, मैं बता रहा हूँ। कितना कॉन्फिडेंस। फाइनली जो सेक्रेटरी था वाइसराय का वो दौड़ गया, बोला क्यों लड़ाई कर? बोला कि पाइप के लिए लड़ाई कर। बोले एक काम करो, सॉल्यूशन दो, बताओ मुझे दे दो इसको। और वो लेके इंग्लैंड चला गया। डोमिनिक लेपर की किताब में सारी बातें लिखी हुई है, पढ़ना कभी शौक से, पढ़ाई का शौक अगर है तो। बाकी चीजें तो हास्यास्पद है इस बात को बोलने में। बहुत शानदार किताब है, आप आज ही ले लीजिए उसको। अगर अगले साल भी एग्जाम देना है तो भी बड़ा इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स क्रिएट करेगा आपकी किताब में। तो इस तरह से डिवीजन बाकी लिखना है। द थर्ड जून प्लान वाज प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। द थर्ड जून प्लान was presented in British Parliament and Indian Independence Act was passed. Indian Independence Act was passed in British Parliament on 18th July 1947. On 18th July 1947. After this act, British paramountcy in India was over. British paramountcy
in India was समाप्त. British servants on 18th July was passed. Indian Independence Act was passed in British Parliament. On 18th July 1947. On 18th July 1947. After this act, British paramountcy in India was over. British paramountcy in India was over. समाप्त. British सर्वोच्चता भारत में समाप्त. British paramountcy in India was over. 5 मंथ में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे. कंप्लीट एकदम कंप्लीट हो जाएगा. सब्जेक्ट कंप्लीट कर देंगे. ठीक है 5 मंथ कंप्लीट करने का कोई बात बोला ना. सिलेबस कंप्लीट होगा अपनी टाइम. So British paramountcy in India was. Why India accepted the dominant status instead of complete independence? आज एक बात करें. तो उससे क्या लेना? देखो क्या है ना कि सुनो बात कि उसमें सिचुएशन बहुत वोलेटाइल था और ब्रिटिश ऑफिसर्स ही सारे ब्रिटिश थे. इन्होंने काम करना बंद कर दिया. इसलिए अगर इमीडिएटली कांग्रेस ट्रांसफर नहीं कर पाई ना पावर, तो फिर यहाँ पर एक सिविल वॉर का कंडीशन डेवलप और ब्रिटिश बहुत आसानी से डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हो गई. तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर फैसिलिटेट होता है इससे. दूसरा है मच नीडेड थिंग दैट वाज कंटिन्यूटी ऑफ द आर्मी एंड द सिविल सर्विसेज. अचानक से अगर ब्रिटिश अपने सारे ऑफिसर्स को विड्रॉ कर ले तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होगा. इसलिए डोमिनियन स्टेटस विल प्रोवाइड मच नीडेड कंटिन्यूटी ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड मिलिट्री. एंड थर्ड, ऑल इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वुड रिमेन एज इट इज. राइट, अदरवाइज ऑल द इन्वेस्टमेंट विल टर्न इनटू डेट एंड इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू रिटर्न द डेट. इसलिए नया स्टेट की सर्वाइवबिलिटी के लिए डोमिनियन स्टेटस जरूरी है. ब्रिटिश तो इंसिस्ट कर रही थी डोमिनियन स्टेटस पे. दैट वाज कंटिन्यूटी ऑफ द आर्मी एंड द सिविल सर्विसेज. तो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर फैसिलिटेट होता है इससे. दूसरा है मच नीडेड थिंग दैट वाज कंटिन्यूटी ऑफ द आर्मी एंड द सिविल सर्विसेज. अचानक से अगर ब्रिटिश अपने सारे ऑफिसर्स को विड्रॉ कर ले तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स होगा. इसलिए डोमिनियन स्टेटस विल प्रोवाइड मच नीडेड कंटिन्यूटी ऑफ द सिविल सर्विसेज एंड मिलिट्री. एंड थर्ड, all economic relation between India and England would remain as it is. Fine. Otherwise, all the investment will turn into debt, and Indian government will have to return the debt. इसलिए नया स्टेट की सर्वाइवबिलिटी के लिए डोमिनियन स्टेटस जरूरी है. ब्रिटिश क्यों इंसिस्ट करेगी डोमिनियन स्टेटस के लिए? नया देश बनेगा, नेता बड़े-बड़े वादे करेंगे, नया कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, उसका सबसे ज्यादा एडवांटेज किसको मिलना चाहिए? ब्रिटिश को. तो ब्रिटिश विल फर्दर एनहांस इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. इसलिए डोमिनियन स्टेटस एक विन-विन सिचुएशन था दोनों के. बात रही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नेता सर्कुलेट करते रहते हैं, इंडिया गुलाम हो जाएगा दोबारा. ठीक है, बिकॉज इंडिया को आजादी मिली कहाँ है? ये तो डोमिनियन स्टेटस की बात हुई है. अभी भी इंडिया गुलाम है. मैंने बोला ना इस देश में बहुत अंग्रेज टाइप का देश है. 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया एंड वी डेडिकेटेड आवर सॉवरेनिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया. सो अल्टीमेटली द सॉवरेनिटी ऑफ क्वीन हैड लॉस्ट एंड क्वीन हैड लॉस्ट एंड वी बिकेम द सॉवरेन. तो वेयर इज डोमिनियन स्टेटस और व्हाट इज रिलेशन? ठीक है, अब इंडियन के पार्लियामेंट में क्या है उसे क्या लेना देना है? ठीक है, हमें क्या है अपना पार्लियामेंट, वी आर द सॉवरेन, सॉवरेनिटी लाइज इन द लॉ. तो हार्डली मैटर व्हाट इज डोमिनियन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो आप पूछेगा करने व्हाई इंडिया एक्सेप्टेड द डोमिनियन स्टेटस टू द पीपल ऑफ इंडिया. मैंने बोला ना इस देश में बहुत अंग्रेज टाइप का देश है. 26 जनवरी 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमलगेट किया एंड वी डेडिकेटेड आवर सॉवरेनिटी टू द पीपल ऑफ इंडिया. सो अल्टीमेटली द सॉवरेनिटी ऑफ क्वीन हैड लॉस्ट एंड वी बिकेम द सॉवरेन. तो वेयर इज डोमिनियन स्टेटस और व्हाट इज रिलेशन? ठीक है, अब इंडियन के पार्लियामेंट में क्या है उसे क्या लेना देना है? ठीक है, हमें क्या है अपना पार्लियामेंट, वी आर द सॉवरेन, सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल. तो हार्डली मैटर व्हाट इज डोमिनियन इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो आप पूछेगा करने व्हाई इंडिया एक्सेप्टेड द डोमिनियन स्टेटस. Why India accepted the dominion status? Why India accepted the dominion status, which was against the Lahore Resolution, which was against the spirit of Lahore Resolution, against the spirit of Lahore Resolution. 150 words में इसको लिखेगा. मैंने 3-4 बातें बोल दी आपको. 4 पॉइंट्स हमने रेज किए हैं इसमें. अभी जो बात चल रही है 4 पॉइंट लिखना है. तो भारत की आज़ादी तो हो गई और हम लोग अब जो टॉपिक छोड़े उस पर चर्चा करें. तो पहले तो सुभाष चंद्र बोस एंड INA और उसके बाद रिवोल्यूशनरी टेररिज्म. ये दो बात फैक्ट्स फाइनल. सुभाष चंद्र बोस Subhash Chandra Bose joined Indian politics in non-cooperation movement. Subhash Chandra joined Indian politics in non-cooperation movement. He spreaded the slogan
Swaraj, within a year, spread the slogan in Indian politics, in non-cooperation movement. Subhash Chandra joined Indian politics in non-cooperation movement. He spread the slogan Swaraj within a year. Joined Indian politics in non-cooperation movement. He spread the slogan Swaraj within a year. He spread the slogan Swaraj within a year. He spread the slogan Swaraj within a year. In 1929, Subhash and Nehru demanded complete independence instead of dominion status. Instead of dominion status. Both established Independence of India League. Both established Independence of India League. Independence of India League. After Government of India Act 1935, Independence of India League. Both established Independence of India League. Independence of India League. After Government of India Act 1935. After Government of India Act 1935, Subhash and Gandhi After Government of India Act 1935, after Government of India Act 1935, Subhash and Gandhi developed differences on many issues. Developed differences on many issues. Particularly during the World War. Particularly during the World War. The opinion of Subhash and Nehru, opinion of Subhash and Gandhi was very different. Was very different. आपको याद है कि क्या क्या बात हुई थी उस वक्त वर्ल्ड वॉर में? गांधी का कहना था सपोर्ट टू ब्रिटेन इन द वॉर. क्या क्या? The opinion of Subhash and Nehru, opinion of Subhash and Gandhi was Subhash and Nehru, opinion of Subhash and Gandhi was very different. Was very different. आपको याद है कि क्या क्या बात हुई थी उस वक्त वर्ल्ड वॉर में? गांधी का कहना था सपोर्ट टू ब्रिटेन इन द वॉर और सुभाष का कहना था नो सपोर्ट टू अदर पार्टी बट वी मस्ट स्टार्ट द मास मूवमेंट. गांधी कैसे रिस्पॉन्ड किया इस बात पर कि मास मूवमेंट लॉन्च करने से इंडायरेक्टली नाजी पार्टी को सपोर्ट मिलेगी, इसलिए हमें कोई भी एंटी ब्रिटिश काम नहीं करेंगे. नेहरू दोनों के पक्ष में नहीं थे या दोनों के पक्ष में थे. ठीक है. इन 1938 हरिपुरा सेशन, इन 1938 Haripura session, Subhash became president of Congress. Subhash became president of Congress. He wanted to introduce major change in Congress. Major change in Congress. In organizational level and functional level. Major change in Congress in organizational level and functional level. But Subhash was not getting support from many Gandhian supporters in the Congress. Many Gandhian supporters in the Congress. Gandhian supporters in the Congress. In 1939, Tripuri session of support from major change in Congress in organizational level and functional level. But Subhash was not getting support from many
Gandhian supporters in the Congress. Many Gandhian supporters in the Congress. Gandhian supporters in the Congress. In 1939, the police station of Congress. The police station of Congress. Subhas wanted re-election as a president. Re-election as a president. Re-election as a president. But Gandhi supported Patwari Sitaramaiya. Patwari Sitaramaiya. In election, Subhas defeated Sitaramaiya. Re-election as a president. Re-election as a president. But Gandhi supported Patwari Sitaramaiya. Patwari Sitaramaiya. In election, Subhas defeated Sitaramaiya. Defeated Sitaramaiya. Gandhi opposed election of Subhas. Gandhi opposed election of Subhas. बोला सुभाष की हार मेरी हार, सितरमैया की हार मेरी। तो सबने मनी मन बोला कि फिर क्या आप मेरी हार नहीं पाएंगे जीवन में? तो सुभाष defeated Sitaramaiya. Gandhi opposed election of Subhas. Gandhi opposed election of Subhas. बोला सुभाष की हार मेरी हार है, सितरमैया की हार मेरी। तो सबने मनी मन बोला कि फिर क्या आप कभी हार नहीं पाएंगे जीवन में? तो सितरमैया की हार मेरी हार। Many members of Congress working committee. Many members of Congress working committee. Many members of Congress working committee passed resolution on Subhas. Resolution on Subhas. Therefore, Subhas Chandra Bose resigned from the primary membership of Congress. Subhas Chandra Bose resigned from the primary membership of Congress. Primary membership of Congress. Since elected president resigned, it is known as Tirupuri crisis. Since elected president resigned, primary membership of Congress. Since elected president resigned, it is known as Tirupuri crisis. Since elected president resigned, it is known as Tirupuri crisis. Tirupuri crisis. Rajendra Prasad became interim president. Rajendra Prasad became interim president. Interim president. So Tirupuri session में सुभाष के रिजाइन करने के बाद राजेंद्र प्रसाद became interim president. Tirupuri crisis में became the president of the Congress. तो सुभाष जो थे ना, सुनो स्टोरी अब अरेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो सुभाष he resigned from the Congress and he established forward bloc. तो सुभाष ने बोला कि जितने सोशलिस्ट कैरेक्टर के पार्टी हैं, they all should come together to start the mass movement against British. अगर उनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला नहीं और ब्रिटिश गवर्नमेंट सुभाष को वॉच कर रही थी कि कहीं ये मास मूवमेंट की ज्यादा बातचीत कर रहा है, इसको पहले जेल में डालो। तो सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रखा कलकत्ता में और हाउस अरेस्ट से भाग गए। बारी बारी थे अफगानी टाइप लगते थे। अफगानिस्तान के रास्ते सोचो, बंगाल से कलकत्ता से अफगानिस्तान के रास्ते सोवियत यूनियन से हेल्प लेकर के वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हासिल करना चाहते। सोवियत यूनियन भी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, मगर वर्ल्ड वॉर में हालात ऐसे बने कि सोवियत यूनियन को ब्रिटेन के साथ आना पड़ा, क्योंकि 1941 में जर्मनी ने हमला कर दिया सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन एक बार फिर ब्रिटेन के शरण में था, अलायंस में था। तो जब ब्रिटेन का अलायंस हो गया तो सुभाष चंद्र बोस को सोवियत यूनियन छोड़ना पड़ा और वो जर्मनी चले। जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की, हिटलर भी काफी खुश हुआ सुभाष से मिलकर, बोला सुभाष यू आर ओनली गुड बॉय इन इंडिया। वहां पर जो इंडियन डायस्पोरा रहती थी जर्मनी में, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया। नाउ ही बिकेम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष बोलते थे कि हम जर्मनी, इटली और जापान तीनों के साथ हेल्प लेंगे, एंटी ब्रिटिश फोर्सेस के साथ हेल्प लेंगे ब्रिटेन के खिलाफ। गांधी यहां से फिर चिल्लाए, सुभाष
अगर हम एक इंपीरियलिस्ट को डिफीट करने के लिए दूसरे इंपीरियलिस्ट का हेल्प लेते हैं ना, दैट वुड बी आइडियोलॉजिकल कंप्रोमाइज। ठीक है, ये जो जर्मन, इटालियन और जापानीज है, दे आर नॉट ओनली इंपीरियलिस्ट, दे आर रेसिस्ट आल्सो। गलती मत करो, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में बैठे हुए थे, इसमें जापान थे, बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वहाँ पर एक सरदार जी थे, यानी प्रीतम सिंह, गुरुद्वारा से निकलते थे और सीधे इंडियन प्रिजनर्स के पास लंगर लेके पहुंच जाते थे। एक जापान का मेजर था, मेजर फूजीवारा, दोनों ने मिलकर के लोगों का खूब ब्रेन वॉश रोज बोलते थे, सरदार तुम लोग क्या आदमी है? इंडियन सोल्जर्स बोलता था क्यों आदमी तो है? बोले कि हाँ आप बहुत सारी आदमी है, तो तुम्हारे देश को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया है और उसी के लिए लड़ने के लिए आ गए। काफी बार बोला कि सोल्जर्स के अंदर सरदार जी आप नहीं आए। तो इसी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिला कैप्टन मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी मास्टर, और इस बार वहाँ पर रास बिहारी बोस भी थे। आज आपको चांदनी चौक टू जापान, उन्होंने वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग स्टैब्लिश की और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई बैंकॉक में, जिसको बैंकॉक कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। और उसी कॉन्फ्रेंस में सुभाष चंद्र बोस को इन्विटेशन भेजा गया और सुभाष चंद्र बोस जापान आए, जर्मनी के हेल्प से जापान, और जापान में उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का कमांड अपने हाथ में लिया। शाहनवाज, हिलन और शर्गल, ये 3 कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो। British government had imprisoned Subhas. British government had imprisoned Subhas in house arrest. In house arrest. Subhas escaped from Calcutta. Subhas escaped from Calcutta and went to Soviet Union and went to Soviet. House arrest. Subhas escaped from Calcutta. Subhas escaped from Calcutta and went to Soviet Union. Escaped from Calcutta. Subhas escaped from Calcutta and went to Soviet Union and went to Soviet Union. He wanted to take the help of Soviet Union. He wanted to take the help of Soviet Union against Britain. Against Britain. Soviet Union joined the alliance of England. Soviet Union joined the alliance of England against Germany. Against Germany. Therefore, Subhas escaped to Germany. Escape to Germany. Escape to Germany. Indian diaspora in Germany. Indian diaspora in Germany. PIASPORA. मतलब जो peoples of Indian origin. Indian diaspora in Germany. Gave the title of Indian diaspora in Germany. Indian diaspora in Germany. PIASPORA. मतलब जो peoples of Indian origin. Indian diaspora in Germany. Gave the title of Netaji to Subhas. Gave the title of Netaji to Subhas. Netaji to Subhas. With the help of Germany, Subhas went to Japan. Went to Japan. Indian diaspora went to Japan. Okay. Next is again. Okay. In Japan, went to Japan. Indian diaspora went to Japan. Okay. Next is again. Okay. In Japan, Netaji to Subhas. With the help of Germany, Subhas went to Japan. Went to Japan. Indian diaspora went to Japan. Okay. Next is again. Okay. In Japan, there were many prisoners of war. There were many prisoners of war. Who were under the guidance of Pritam Singh. Under the guidance of Pritam Singh.
and Major Fujiwara constituted Indian National Army. Constituted Indian National Army. National Army. Constituted Indian National Army. Indian National Army. It was formally founded by Captain Mohan Singh. Captain Mohan Singh. Formally founded by Captain Mohan Singh. ये क्वेश्चन आएगा तो कैप्टन मोहन सिंह. इंडियन है मगर ब्रिटिश मिलिट्री में है. कैप्टन रैंक है रैंक का. रास बिहारी बोस. Established Indian Independence League. Indian Independence League. Its first meeting was held in Bangkok. Known as Bangkok Conference. He invited Subhash Chandra Bose. To come to Japan. Invited Subhash Chandra Bose to come to Japan. In Japan, he created 3 regiments of iron. Under Shahnawaz, Hilal and Sehgal. He created 3 regiments of iron. Under Shahnawaz, Hilal and Sehgal. In Japan, he created 3 regiments of iron. Under Shahnawaz, Hilal and Sehgal. Subhash established Provisional Government of Free India. Established Provisional Government of Free India. With headquarters at Singapore. Provisional Government of Free India. With headquarters at Singapore. His official designation was Prime Minister of India. Subhash was Prime Minister of India. His official designation was Prime Minister of India. Germany, Italy and Japan immediately gave recognition to Subhash Chandra Bose to this government. Immediately gave recognition to this government. Japan also handed over island of Andaman and Nicobar. Japan also handed over island of Germany, Italy and Japan immediately gave recognition to Subhash Chandra Bose to this government. Immediately gave recognition to this government. Japan also handed over island of Andaman and Nicobar to Subhash Chandra Bose, which was renamed as Shahid and Swaraj.
which was renamed as Shahid and Swaraj. अंडमान एंड निकोबार, which was renamed as Shahid and Swaraj. अभी रिसेंटली 2017 में बहुत सारे आइलैंड का नाम रिनेम किया, उसमें रॉस आइलैंड है, हैवलॉक आइलैंड है, हील आइलैंड है, इसको जरा देखिए, और बहुत सारे आइलैंड के नाम परमवीर चक्र के बॉडी के नाम पर है। इस फैक्ट्स को जरा चेक करिए। The recent announcement of the name change of the islands of Andaman and Nicobar. ये जरा फैक्ट चेक करना, और कौन-कौन से आइलैंड के नाम बदले गए। काम करने के लिए बोला है, पुराने लगते हो काम करते हो। So government of India decided to change the name of few islands of Andaman. तो फैक्ट कब चेंज करना है या कौन-कौन से आइलैंड का नाम चेंज हुआ, ये चेक करना है। तो अंडमान और निकोबार was renamed as Shahid and Swaraj. Headquarter of the government. Headquarter of the government was later on shifted to Burma. Subhas established Azad Hind Bank. Azad Hind Bank in Burma. सिंगापुर रेडियो से भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को फादर ऑफ नेशन Subhas established Azad Hind Bank. Subhas established Azad Hind Bank. Azad Hind Bank in Burma. सिंगापुर रेडियो से भाषण देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को फादर ऑफ नेशन बोला था। So गांधी called father of nation. ये सुभाष ने एड्रेस किया था सिंगापुर रेडियो से। he made a speech about the father of nation. बापू, ये सब कुछ सुभाष ने इस्तेमाल किया। Yes. So father of nation was इस्तेमाल किया था सिंगापुर रेडियो से। आजाद हिंद बैंक। तो अगर चेंज करके या पॉइंट जैसे लिख रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी did not get success. Because Japan did not get success. Because Japan did not support it with the military establishment. Finally, after defeat of Japan in Second World War, defeat of Japan in Second World War, the fate of INA was also sealed. And it was said Subhash Chandra Bose died in plane crash. In Taiwan. It was said that Subhash Chandra Bose died in plane crash in Taiwan. That's what in Second World War, defeat of Japan in Second World War, the fate of INA was also sealed. And it was said Subhash Chandra Bose died in plane crash. In Taiwan. It was said that Subhash Chandra Bose died in plane crash in Taiwan. अभी तक कमीशन और कमिटीज बनाई जा रही है to search the Subhash Chandra Bose. आप घर में काम करेंगे. Discuss the commission and committees related to the death of Subhash Chandra Bose. Right. Discuss the commission and committees. It was said that Subhash Chandra Bose died in plane crash in Taiwan. अभी तक कमीशन और कमिटीज बनाई जा रही है to search the Subhash Chandra Bose. आप घर में काम करेंगे. Discuss the commission and committees related to the death of Subhash Chandra Bose. Right. Discuss the commission and committees related to the death of Subhash Chandra Bose. इसमें शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, मुखर्जी कमेटी, ये सब कमेटी पर चर्चा करेंगे. शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, मुखर्जी कमेटी लेटेस्ट regarding the disappearance of नेताजी. तो शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी एंड मुखर्जी. अब सुभाष चंद्र बोस, इसमें शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, मुखर्जी कमेटी, ये सब कमेटी पर चर्चा करेंगे. शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी, मुखर्जी कमेटी लेटेस्ट रिगार्डिंग द डिसअपीयरेंस ऑफ नेताजी. तो शाहनवाज कमेटी, खोसला कमेटी एंड मुखर्जी, इन सब पर आप चर्चा करिएगा. डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस.
बात खत्म नहीं हुई. After his death, 3 commanders of INA was arrested. After his death, 3 commanders of INA was arrested. They faced trial. Famous known as Red Fort trial. Famous known as Red Fort trial. Known as Red Fort trial. Famous known as Red Fort. These commanders faced the charge. Of declaring war against British Empire. Faced the charge of declaring war against British Empire. Declaring war against British Empire. They faced death penalty. They got death penalty. But during the trial, the charges against them was dropped. The charges against them was dropped in the military court. The charges against them was dropped in the military court. And their death penalty was converted into life military court. The charges against them was dropped in the military court. The charges against them was dropped in the military court. And their death penalty was converted into life imprisonment. Death penalty was converted into life imprisonment. These INA soldiers were defended by. ये सब प्रीलिम्स में फैक्ट्स आते हैं. These INA soldiers were defended by जवाहरलाल नेहरू, K.N. Kartju, तेज बहादुर सप्रू, गुलाभाई देसाई. So these INA soldiers were defended by तेज बहादुर सप्रू, K.N. Kartju, जवाहरलाल नेहरू एंड गुलाभाई देसाई. ये लोग डिफेंड करने आए थे INA soldiers. अब ये जो सेगमेंट है इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशनरी टेररिज्म करने आए थे INA soldiers. अब ये जो सेगमेंट है इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशनरी टेररिज्म पर एंड their death penalty was converted into life imprisonment. Death penalty was converted into life imprisonment. These INA soldiers were defended by. ये सब प्रीलिम्स में फैक्ट्स आते हैं. These INA soldiers were defended by जवाहरलाल नेहरू, K.N. Kartju, तेज बहादुर सप्रू, गुलाभाई देसाई. These INA soldiers were defended by तेज बहादुर सप्रू, K.N. Kartju, जवाहरलाल नेहरू एंड गुलाभाई देसाई. ये लोग डिफेंड करने आए थे INA soldiers. अब ये जो सेगमेंट है इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशनरी टेररिज्म पर रिवोल्यूशनरी टेररिज्म सेक्टर क्या क्या बचा है. रिवोल्यूशनरी टेररिज्म है, एजुकेशनल पॉलिसी बचा है, पीसेंट मूवमेंट, ट्रैवल, ठीक है, लेबर मूवमेंट. ये छोटे छोटे टॉपिक बचे तो कल करेंगे एजुकेशन पॉलिसी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये काम करके रखिएगा. PYQ पलट रहे नहीं पलट रहे खुद से, ठीक है. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पलट रहे हैं. क्वेश्चन बनना भी चाहिए, साइड बन गया होगा. 99% चांसेस है कि एक स्ट्रोक में बन जाएगा. अब जब मुझे ऑनलाइन वाले बच्चे से बात करने दीजिए, बहुत नाराज चल रहा है लोग. बैठिए.